This is your host, Salim bin Muhammad Rafi, and here is my YouTube channel, Zamir Universal. Today I am going to predict, I'm sure the whole world is waiting for, and some of my friends may not like it, some of my viewers, especially who support Israel or the Zionists, will obviously not like this. But this is their own doing. That there is no way that this time complete destruction of Israel does not happen. And it isn't me. I'm going to show you as evidence your own Western professors, white, of pure either American or British or European origin, giving you warning and predicting, and some generals, some colonels, majors predicting this, that it will be the destruction of Israel, to keep insisting that they are going to do ethnic cleansing and they are going to occupy and give nothing to the people who gave them refuge, that's Palestinian. They will kill them one by one. They will enjoy killing their children, they will enjoy killing their women, they will enjoy killing their elderly, and occupying their completely furnished homes, either buy them or evict them by force. Now the resistance they faced the last 75 years gradually increased. Palestinians were not prepared. They were very kind, very generous, and having Islamic faith, they believed in helping. As right and the arrival of the Holy Prophet, peace be upon him, Muhammad Mustafa, when he migrated from Mecca, because of the cruelty and persecution he faced from his own tribe, Quraysh, Christians, Jews, and all other people living in Mecca. He was forced. And when he arrived in Medina, the people of Medina, just like the Palestinians, they welcomed these refugees and they offered them their homes, food, shelter. So this is part of Islamic culture. And the Jews or the Zionists, the leftovers of Hitler's, and it wasn't Hitler. People think that's only Germany. All of these things would be brought to bear against us. But what's most important, I think, for Americans to understand is if we attack Iran on the basis of Hezbollah's alleged willingness to attack Israel if Israel invades Gaza, we will end up in a fight with Russia. Russia will not sit by quietly and watch Iran destroyed by the United States air and naval power in the region. And once Russia enters this, it becomes much more than just a local conflict, maybe more than just a regional war. We haven't thought this through. We need to do that. And I doubt seriously at that point that the Turks would be able to stay out. The Turks are Sunni Muslims. They are the de facto leaders of the Sunni Muslim world. They have the largest armed forces in the region. They are in close proximity to Israel. They could move forces south through Syria very rapidly. And I'm sure Bashar al-Assad, assuming he even survives the opening of this campaign, would not obstruct them. So many questions, but just to back up one click, you described Iran's missile arsenal, but Iran is a country that's been the subject of a very intense sanction regime from the United States, increased by the last president, Donald Trump, but for a long time. How is Iran still such a powerful country militarily given those sanctions? It sounds like maybe they didn't work. Oh, no, I think that's an important point, Tucker, and you're absolutely right.
we place so much value on these sanctions and assume that they have this profound impact. Normally, sanctions harm the population in terms of lowering its standard of living, making life more difficult for the everyday citizen, but it doesn't fundamentally alter the policy or the goals and objectives of the government. And this is something that I don't think we understand. And the same thing is true for Hamas and Gaza. You want to go after Hamas. You want to destroy it. I think everyone with a sound mind is interested in the destruction of Hamas. But do you want to kill hundreds of thousands of people in order to get at Hamas? That's the question. We have the same problem in Iran. Our sanctions have not harmed the regime's ability to develop and build very, very complex and sophisticated missiles. These missiles are very accurate now. There are hundreds, if not thousands. And the long-range missiles, the 1,200-mile range theater ballistic missiles, are a very serious threat to us in the region and to Israel. And the sanctions have had no impact there. If anything, the Iranians have pulled together the best human capital in their country, the best engineers, the best thinkers, and put them to work primarily on missile technology and on cyber warfare. And that's where we stand right now. We have to expect the worst as a result if we strike Iran. How is the U.S. military, do you think, having spent your life in it, leading troops in combat and at the Pentagon, positioned to respond to war with Iran right now? Are we in a strong position or not, in your view? No, I don't think we're in a strong position. I think we're probably at the weakest point in our recent history. I think you've got to look at the realities of new weapon systems, new capabilities. The United States Navy, if it's going to preserve its capability at sea, is probably going to be compelled to operate somewheres north and west of Sicily. If it comes within closer range, then it falls into this envelope where the Iranians can strike it. And as I said before, we have to assume the Russians will come into this. Once you move into the Eastern Mediterranean, you are vulnerable to the Kinshal missiles and other missiles, cruise missiles and hypersonic missiles that the Russians have. This makes it very difficult to fly strikes in support of the Israeli Defense Force against Hezbollah, because now you're flying a very long distance. You deliver your ordnance, you have to land in Israel in order to refuel. Israel is going to operate under a hail. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से हमास के लीडर को मारा है इसराइल ने, आज इसराइल पर हिजबुल्लाह का पहला बड़ा हमला था। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये असल में इसराइल की मैरून एयर बेस है और आप ये समझ लें कि इसराइल की जो मेन एयर बेस है जिससे उसने हिजबुल्लाह की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसी एयर बेस से उन्होंने हमास के लीडर और ये तमाम चीज़ों के लिए जासूसी की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिजा के लिए रखी और इसको आज इन्होंने उड़ा दिया है। और आप देख रहे हैं कितनी तबाही आज उन्होंने की है। असल में आप समझिए कि ये 1967 के अंदर ये बनाई गई थी और इसने इसराइल को कामयाबी दिलवाने में 1967 की आपको पता जंग है और ये तमाम चीज़ें उसके बाद के मामला इसने बड़ा किरदार अदा किया। अब ये करती क्या है, इस बेस के ऊपर इनका सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम था जिसको हिजबुल्लाह ने उड़ा कर रख दिया है। यानी आप ये सोच नहीं सकते कि इसराइली सब कितने पागल हुए पड़े हैं। ये असल में काम ये करती थी कि एरियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीर लेती थी। यानी इस बेस के ऊपर तस्वीर जितने एयरक्राफ्ट आते थे एयर स्पेस में इसराइल के और ये इसके सराउंडिंग, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आते थे और मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ पर कोई भी हमला होना है, कोई भी चीज़ होना है, इसने ट्रैक यहाँ से करना है। कोई भी खतरा होता था इसराइल को तो वो यहाँ से ट्रैक करते थे। किसी एयरक्राफ्ट को इन्होंने टारगेट करना होता था या इन्होंने कोई भी चीज़ को हमला हो रहा है, कोई बड़ा मिसाइल कोई चीज़, यहाँ से इंटरसेप्ट करते थे ग्राउंड से। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझ लें कि इसराइल का जो एयर कंट्रोल सिस्टम है जो एक्सट्रीमली क्रूशल है ऑपरेशन कैपेबिलिटी के लिए, उसकी एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम था, जिसके लिए उन्होंने हर तरह की चीज़ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार थे। वो ये असल में हुआ ये है कि इस सारे मामले पर ये सारा कंट्रोल सिस्टम, ये आसमान का यानी स्काई से लेकर हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और तमाम की तमाम जितनी चीज़ें थी, ये असल में यहाँ से ही काम होता था, ऑपरेट होता था।
यानी आप ये समझ रहे पूरी जो इनकी चेन थी कि कोई खतरा हो रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना, एक्टिवेट करना, वो तमाम की तमाम चीजें, जितना जासूसी का निजाम था, जितना उनके एयरक्राफ्ट को मदद चाहिए थी, जितनी उनकी तमाम चीजें थी, वो यहां से होती थी। और अजीबोगरीब मामला ये है कि इसके ऊपर इतने डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीजें इंस्टॉल है। हैरानकुन तौर पर उन्होंने जब मिसाइल और चीजें मारी और वो जाकर उन्होंने उनकी तबाही कर दी, आज हिजबुल्लाह ने इसके ऊपर बड़ा जश्न मनाया और इजराइल के अंदर जाहिर सी बात है इस बात के ऊपर शदीद गुस्सा है कि ये किस तरह तबाह हो गया। और उनके हाथ देखिए, कोई चीज मिसाइल या कुछ आता था तो यहां से वो डिटेक्ट कर लेते थे। अब मजे की बात ये इसी को तबाह करने के लिए आया है और वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और वो सारा कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, उड़ा दिया। इस सारी सूरत हाल में इसराइल में जो गम और गुस्सा पाया जाता है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब इसराइल के इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक और उनके मीडिया के मुताबिक मामला क्या है, वो क्या समझ है, वो ये समझ रहे हैं कि लिबनान ने हम पर करना है बहुत बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा हमला करना है, और उस हमले से पहले कि उनके जो मिसाइल आए, उनकी जो चीजें हैं, वो हमारे इस जो एयरफोर्स की बेस है, मिलिट्री बेस है, यहां से डिटेक्ट होती थी, पता चल जाता था खतरात आ रहे हैं। उन्होंने उस हिस्से को ही तबाह कर दिया, वो कम्युनिकेशन सिस्टम और तमाम चीजें उन्होंने उसको उड़ा कर रख दिया। अब वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वो कह रहे हैं कि अब खतरा ये है कि यहां से वो जब दोबारा हमला करेंगे तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि हम पर ये बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं जो शायद हम अफोर्ड ना कर सके और हम यहाँ से डिटेक्ट ही ना कर सके, हमें पता ही ना चले, इंटरसेप्ट भी ना कर सके, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई चीज़ आ रही। सोचिए आपने वो मिलिट्री बेस उड़ा दी है, उसके मेन कंपोनेंट्स आपने उड़ा दिए हैं जिसका काम ही ये था कि उसने आने वाले खतरात को पकड़ना है, उन्होंने उसी के ऊपर हमला कर दिया है। यानी आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम, हिजबुल्लाह ने पिछले काफ़ी अरसे से यही काम किया है। इनका जो मिलिट्री का इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, असल में उन्होंने इस दफ़ा काम ये किया है कि इनके जासूसी के निज़ाम को उड़ाया है कि उसके बाद मारेंगे तो हम बाद में, हमला तो हम करेंगे बाद में, जो भी सूरत हाल होगी। उन्होंने उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। अब आप सोचे आपके ऊपर कोई खतरा है, कोई जहाज है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो वो आप अगर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए आज इजराइल बहुत ज़्यादा चीख रहा है, इतना ज़्यादा चीख रहा है, उनको इतना गुस्सा है कि जिसकी इंतहा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ क्या। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा आपकी कोई चीज़ तबाह हो जाती है, दोबारा भी वो हो सकती है। अब ये मामला भी बड़ा अजीबो गरीब है कि आप ये नहीं हो सकता कि दौरान जंग ही आप इसको रिपेयर करते रहे, क्या पता अगला फिर हमला हो जाए और उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। उतनी देर में आप ठीक करें, उन्होंने अपना अगला टारगेट जो है वो कर देना। आप किसी भी जगह पर हमला देखें तो वो जाकर काम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरे तबाह करते हैं ताकि चोर जाएं या कोई और जाए, कुछ हो तो उनकी तस्वीर, उनका डेटा ना है। यही काम इन्होंने किया है। इन्होंने जाकर सबसे पहले इनका इक्विपमेंट्स तबाह किए हैं, इनका वो पूरी बेस तबाह कर दी, उड़ा दी है, जिसके बाद अब वो जो हमला करने के लिए जा रहे हैं वो इसराइल के लिए बड़ा ज्यादा खतरनाक हो सकता है।